श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। आज प्रथम अध्याय का वीडियो पहले हमने डाल दिया था। आज श्रीमद् भागवत महात्म्य, जो पद्म पुराण के ये 6 अध्याय हैं, उस श्रीमद् भागवत महात्म्य के दूसरे अध्याय का मूल पाठ आप सब लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें। ऐसा श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो जीव को भगवान के चरणार बिंद प्राप्त करने में, जीव मात्र के कल्याण के लिए, जिसको श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाए थे। धुंधकारी जैसे प्रेत श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को श्रवण करके और मनन करते हुए अपने प्रेतत्व से मुक्त हुए। यह श्रीमद् भागवती एक एक शब्द भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप, एक एक शब्द में भगवान श्री कृष्णचंद्र समाये हुए हैं। उन्हीं के दिव्य छटा का अपने मन में, अंतःकरण में ध्यान करते हुए और हम उस पावन धरा की ओर चलते हैं जिसको हम नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 18 पुराणों की कथा वहीं से प्रारंभ हुई। हम सब ये 18,000 श्लोकों को श्रवण करने से, पाठ करने से, इसमें श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि एक श्लोक का पाठ करें अथवा आधे श्लोक का ही पाठ करें तो भगवान की प्राप्ति, और भगवान हमेशा आपके कष्टों को दूर करते हैं। आइए हम सब लोग श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की ओर चलते हैं। आज द्वितीय अध्याय का पाठ हम श्रवण करते हैं, पाठ करने का प्रयास करते हैं। यदि कहीं मान लीजिए किसी कारणवश त्रुटियां होती हैं तो उसके उन त्रुटियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आप सब लोगों से आग्रह करते हैं कि जहाँ पर त्रुटि हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके संदेश भेजें, जिससे कि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मरदुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या सा कृष्णः क्वापि नो गतः। तम तु भक्तिः प्रिया तस्या सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि।
सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः इति निश्चित्य चिद्रूपा सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां बद्धाञ्जलिं त्वया पुष्टिं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोसि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवे कृतादिदापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता तदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च तमोपायं चिन्तयाम्यहम् कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ते जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तिविनिन्दकः अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलम व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलम ज्ञानकथालापै भक्तिरेकैव मुक्तिदा श्रुत्वाच इति नारदनिर्णीतं स्वामाहात्म्यं निशम्यसा इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्यसा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिर्वाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिन् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्बाधाध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय श्रुत्वाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमादेभिः कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुद्धताम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ द्वितीयोऽध्यायः नारदुवाच तथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मरदुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः तं तु भक्तिः प्रिया तस्या सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् यातिनी च गृहेष्वपि सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ मुक्तसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपा सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्ति सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम् बद्धाञ्जलिं त्वया कृष्णं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वां करोषि च पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तिविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च
मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिचयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्री कृत्य त्वयैमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहं कलिना सदृशं कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसेद्भक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरेसाध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ति जगत्त्रयी दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्तिविनिन्दकः अलमृतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलमृतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा सूतुवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिताक्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय श्रुत्वाच तया वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभिः कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं वैराग्यप्रबुध्यतां वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चित् चोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ बकवत्पालितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ क्षुच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ दिशिश्चिन्तापरो जाता किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तद्दैवात् भून्मादिशे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षे तं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पृष्टं तत्सर्वैरपि विस्तृतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदुवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः क भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया श्रुत्वाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्च निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रेतुरद्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूता तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावहः वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतत्तिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति करणे करणे जपञ्जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुर्मित्रैर्यमानुषैः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैर्यमानुषैः
तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिहमानुषैः एवं ऋषिगणैः पुष्टैर्निर्णीयोक्तं दुरासदम् ततश्चिन्तातुरासोऽथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिषत्तमः। नारदुवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवतः कुमाराब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलयाः हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कथमात्रैकजीविनः हरे शरणमेवं हे नित्यं येषां वचे मुखे वचः हरे शरणमेवं हे नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपाता पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः अशरीरगिरोक्तं यत्तत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारावुचुः मा चिन्तां कुरु देवरसे हरसं चित्ते समावह उपाया सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानमग्रडीयोर्गभास्करः अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानमग्रडीर्योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थाना प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायाः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकाः पन्थाः सतो गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्या स्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः तु गीतः सुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् प्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् प्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्रिका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्ति प्रेमरसावह प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारदुवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतत्तिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् कथं बोधमेष्यति तत्कथं बोधमेष्यति श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थाः श्लोकी पदे पदे छिन्दन्तु संशयं येनं भवन्तो मोघदर्शनाः निर्विलम्बो नात्र कर्तव्याः शरणागतवत्सलाः छिन्दन्तु संशयं येनं भवन्तो मोघदर्शनाः निर्विलम्बो नात्र कर्तव्याः शरणागतवत्सलाः कुमारावुचुः वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः आमूनाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयाः सम्पृथग्भूता फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन् स्वदायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्कराव्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्ठा तदा भागवती कथा इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्कराव्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसंस्नाता गीताया अपि कर्तरि
परितापवति व्यासे मुह्यत ज्ञान सागरे वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत यज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयाकेन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं तत्र ते विस्मयाकेन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदुवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य सुखानि सद्या श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्धितानां निशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोत्सवः। श्रीकृष्णचन्द्रदेवताः प्रीयतां नमः। बालकृष्ण भगवान की जय।